बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स की बुक फॉर 3+ years एंड नाउ इट्स टाइम टू डू आवर नेक्स्ट नंबर। लास्ट लेसन में हमने नंबर्स किए थे नंबर 16 तक। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंबर 16 के बाद कौन सा नंबर आता है? कौन सा नंबर? Yes, it's number 17. 1, 10 and 7 units make number 17. तो जब भी हम कोई नंबर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जी, हम उसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प सी स्टोरी सुनते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक दिन सारा की टीचर ने सब बच्चों को बताया कि बुक्स का आलमी दिन आ रहा है, जिसको हम वर्ल्ड बुक डे भी कहते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी क्लास में एक बुक कॉर्नर सेट करेंगे। सब बच्चे अपने अपने घर से एक बुक लेकर आइएगा। अब अगले दिन सब बच्चे अपनी फेवरेट बुक लेकर आए और उन्होंने बुक कॉर्नर में सेट कर दी अपनी सब किताबें। सारा ने तमाम बुक्स को काउंट किया तो वो थी 17 बुक्स, यानी कि 17 किताबें। सब बच्चे बहुत खुश हो गए कि आज तो 17 यानी कि 17 मुख्तलिफ कहानियां सुनने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने बुक के पेज की तरफ। द पेज इज सेइंग listen, say, read and write number 17. The student is expected to count and identify number 17 through pictures or real objects. Trace and write number 17 as well. तो यहाँ पे हैं वही 17 books in the book corner. आप देख रहे होंगे सारा की क्लास में। Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So here we have 17 books. 1, 10 and 7 units make 17 as shown in these two towers. Then color 17 beads. Little explorers. Let the learners walk around classroom and find 17 objects such as pencils, blocks, bottle caps and bring them to teacher's table. Ask them to count all 17 objects. Little innovators. Let the learners explore more about number 17 by scanning the QR code. Little builders. Give the learners 17 straws or sticks. Ask them to build a simple structure or bridge using all 17 pieces. अब बच्चों ने इस bridge बनानी है 17 sticks से या straws से. Provide a large outline of number 17. Ask the learners to fill it with 17 fingerprints using paint. And then, being little thinkers, call out different numbers from 10, 14, 17 and 20. Ask the learners to jump or raise their hands only when they hear the number 17. तो बच्चों ने सिर्फ तब रेज करना है अपना हैंड जब नंबर 17 कॉल आउट होगा। It's time to learn the formation. So let's do the air writing with me. Make a straight standing line and write 1. Then a sleeping line, slanting line, sleeping line and a slanting line makes number 7. This way you are going to write number 17. Trace it and write it. Count and write the number in numeral and words. Let's count these balloons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 balloons are over here. Write number over here and words over here. Count the objects and tick the correct number. There are some oranges. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Tick the number 15 and same goes with the rest of the two questions. There is a teacher's note. Guide the learners to trace and write the number 17. Support them to complete the activities on the page. Help them to complete the related exercises in the activity book.
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का नंबर था हमारा नंबर 17, जिसको हमने बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखा और एक बहुत दिलचस्प स्टोरी भी इसके साथ रिलेट की। आई होप कि आप नंबर्स को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और जो कहानी आप स्कूल में सुनते हैं वो घर जाके अपनी अम्मी को भी सुना रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।